Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. In this slide, we will be discussing production and production functions. So the process of transformation of resources like land, labor, capital and entrepreneurship into goods and services of utility to consumers and or producers. So theory of production क्या कहती है कि that is an analysis of output-input relationship. Production function, also termed as law of variable proportion. It is the short-term production function. Total production is a function of labor. Average और marginal product के लिए definition क्या है कि average product is the total product per unit of variable input, whereas marginal क्या है कि is the addition in total output per unit change in the variable input. तो जो excessive amount, जो एक addition आ रहा है, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें जो भी एडेड एडवांटेज है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट को डिफाइन करती है. Law of diminishing return states. In this slide we will be reading that status that production function shows that stretching the use of variable resources against the limits of fixed resources decrease the marginal product. Second point is that furthermore having too much of one resource and too little of one another can even result in a resource imbalance that decrease production capacity with a negative marginal production. So the lesson of law of diminishing returns, there are 3 points which can clarify this particular definition. The size of the resources should not go beyond its product maximization point. सो टोयोटा है तो वो एक लेवल तक प्रोड्यूस करे, उससे ज़्यादा नहीं. होंडा बाइक्स हैं तो वो एक लेवल तक प्रोड्यूस करे, उस साइज से ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि फिर शेल्फ लाइफ भी उनके ऊपर पड़ेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएगी और शायद उस टाइम फ्रेम के अंदर वो तमाम कैपेसिटी, वो तमाम प्रोडक्ट या इन्वेंट्री जो उन्होंने प्रोड्यूस की वो सेल आउट ना कर सकें. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सप्लेन्ड हियर कि जो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज पॉइंट एक मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है. कैपेसिटी कैन ओनली इंक्रीज विद मोर रिसोर्सेज कंबाइंड विद अनलेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. जिस तरह एग्रीकल्चर की हम एग्जांपल लेते हैं तो जब तक ट्रैक्टर और हार्वेस्टर और ये मशीनरीज नहीं थी तो उसी ज़मीन से वो प्रोडक्शन नहीं निकलती थी. अब जिस तरह यूएस की एग्जांपल दी जाती है कि लैंड इज़ द सेम, ज़मीन वही है लेकिन उनकी प्रोडक्शन यील्ड जो 3 to 4 टाइम्स ऊपर चली गई है. क्यों? ये टेक्नोलॉजिक चेंज की वजह से, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, मुख्तलिफ मशीनरीज की यूटिलाइजेशन की वजह से. सेम गोज़ फॉर द firms and the factory component as well. Resources are basically complementary. Return of scale क्या definition show करता है कि that shows the degree by which the level of output changes in response to a given change in all inputs in a production system. यानी कहने का मकसद प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट चेंज होने की वजह से आउटपुट में भी चेंज आता है. Constant return to scale when a proportionate increase in all inputs yields an equal proportionate increase in output. Increase क्या है? Increasing return when a proportional increase in all inputs yields a more than proportional increase in output. और decrease के अंदर definitely decrease होगा when a proportional increase in all inputs yields a less than proportional increase in output. Next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिटर्न ऑफ स्केल को फर्दर फार्मूले के तहत कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और उसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी किस तरह से डिफ़ाइन होती है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. प्रोडक्शन थ्योरी, उसके प्रोडक्शन प्रोसेसेस और इनपुट और आउटपुट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पर इनपुट्स की बात आ रही है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं, फिक्स इनपुट्स हैं, वेरिएबल इनपुट्स हैं, कुछ कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको डिस्कस करेंगे. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं, उन फार्मूलाज को पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर खान Alyzaee. So continuing on
In lecture 6 stream 2 we will be discussing in this particular lecture under economies of scale the return of scale, what are the formulas which are being used. इसके अलावा हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी को देखेंगे, उसकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को कि वो किस तरह से काम करते हैं. इनपुट्स की बात हो रही है तो डिफरेंट इनपुट्स को देखेंगे, फिक्स इनपुट, वेरिएबल इनपुट्स, और फिर रिसोर्सेज टू क्रिएट गुड और सर्विसेज को कौन कौन से रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूडेड हैं, हम उसको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे. और वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे कि फार्मूलाज कौन से यूज़ होते हैं, और टोटल प्रोडक्ट और एवरेज वेरिएबल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशंस क्या आती हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इंशाल्लाह. Discussing the return of scales, that it measures how output changes relative to resources input in the long run and indicates how overall resources efficiency changes. So the formula which has been used for return to scale is percentage change in quantity divided the percentage change in resource inputs. Further, we can elaborate it with this below table in which the return of scale, if it is greater than 1, then returns is increasing, and marginal productivity and average productivity is also increased. If it's equal to 1, then returns remains constant, marginal and average both remain constant. If it is less than 1, then returns are decreasing and marginal and average productivity will also decrease. If it is less than 0 or negative, then the returns become decreasing. Marginal productivity, that is change in output divided by change in input, becomes negative, whereas the average productivity output divided by input decreases as well. So in this table we can easily calculate the or elaborate the mathematical calculated values if it is equal to 1, greater than 1, or less than 1. Production theory is the study of production or the economic process of converting inputs into outputs. So the production is from input phase goes to the process when let's say inputs are the resource used, that is the raw material of iron, it comes to the factory and then it is processes, and the output is the goods or services. Let's say it from steel we produce CGI sheets or GI sheets, or those sheets which are being used for producing vehicles, cars factories and trucks factories. That steel is being used, that steel is being used in different construction works and buildings, and that is the output. So this is simple definition of the production theory, that input is raw material, it processes in the factory in the furnace, and then it gives the output. It can be used for cotton product and other products as well, but this was just to elaborate the example of a vehicle industry. We will be discussing what are the types of inputs. So the variable inputs, the variable factors, so that is defined as in the long run all factors of production are varies according to the volume of output, or and those changes with the output as well, which means more are employed when production increases and less when production decreases. What are the examples? We will look in a while. Whereas the cost of variable input is called the variable cost as well. So examples are raw material, labor, etc. Whereas the fixed input, when we will discussing fixed input, the fixed factors, so they remains constant regardless of volume. Fixed factors are those that do not change as output is increased or decreased. So mean the output increase and decrease does not have any impact on it. The examples we will be discussing in a while. Now looking at the cost of these inputs, these are also called fixed costs. The variable input, those are called variable costs, whereas the fixed input is called the fixed cost. So what are those fixed costs? Now we will be looking at the examples. Examples कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स है. सो ये वो इनपुट्स हैं, ये वो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो गार्ड है, जो आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कैमराज हैं. These are fixed inputs. So you have to pay regardless, even looking into the current COVID-19 cases, where our factories and different firms are closed, but these are the fixed costs you have to pay, you have to bear it. So these costs has to be made as per the deed. We will be discussing a brief discussion on production uses resources to create a good or service, and that is suitable for use gift giving in a gift economy or exchange in a market economy. So this includes this can include manufacturing, construction, storing, shipping and packaging, etc.
production. We are discussing the total product. So what is total product? Total product is the total amount produced during a specified period of time by all the factors used in a production process. So average product AP is equal to ratio of total product and one variable input, whereas marginal product MP is equal to the rate of change of output as a result change in one variable input. So the formula is AP average product is equal to total product over variable input. Now we will be discussing the various concepts of production. So total production, total physical count, the total amount of output produced in physical unit. Whereas what average product means, कि average product की क्या definition बनती है, AP is equal to total output divided by the total units of input, means production per unit of input. So AP is equal to TP total product divided by the input output. मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो उसके अंदर चेंज आएगा. तो व्हाट इज द डिफरेंस चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल इनपुट. द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और आउटपुट एडेड बाय वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट input while other inputs are held constant. So the below formula will be used to calculate it. We come to the conclusion of this lecture, and in next lecture I will be coming back with the definitions and detailed explanation on classification of length of the time in production processes. Production processes में short run क्या है, long run क्या है, total fixed cost की क्या definition है, total average cost, total cost, हम इन चीज़ों को discuss करेंगे. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की क्या इनपुट और डेफिनेशन आती है, इसको देखेंगे. फिक्स इनपुट, वेरिएबल इनपुट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्दर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर जो 3 स्टेजेस आती हैं, उन 3 स्टेजेस को इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu this is Aamer Alyzaee, and we will be discussing under lecture 6 stream 3 the economies of scale, and in which we will be further discussing the cost of production, cost of firms, and different concept clarity will be taken under this lecture. In this slide we will be looking to the classification of length of the time in production process. So short run and long run. So in short run refers to a period of time in which the quantity of machines and equipment cannot change because of the time allotment, yet long enough to make a changes in this variable. Long run में क्या है कि refers to a period of time which is long enough for all the inputs to be changed and varied. So this is a case in which all inputs are variable and cost of production is likewise variable. तो ये short run और long run की definition आ गई. Total fixed cost क्या होती है? TFC are those costs that do not change as output increase. हमने पिछले लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी. It is also known as overhead or unavoidable cost. जो administrative cost है, जो fixed cost है, जो building की cost. The expenses or payment for fixed inputs are fixed cost. So total variable cost क्या है? Cost which businesses can control in the short run by changing levels of production. There are costs that varies directly as output charges. Total cost क्या है? The sum of the total fixed cost and total variable cost at each level of output. तो दोनों combine हो जाती हैं. Is the sum total of cost of the production which includes payment like wages or salaries for labor, rent for land, building वगैरह वगैरह, interest for capital and normal profit for entrepreneurship. Hence, the other costs are average fixed cost. Every slide we will be looking at the factor of production, different factors involved like land, labor, capital, organization. So we will look at it one by one. That what land means the natural resources such as surface, mineral, air, river, sea. So now these are free gift of nature, and these are fixed. So what is labor? Mental or physical effort done by a man with the view of getting output. Capital, man-made goods used in the production process, and most mobile factor. Organization, it's entrepreneur or coordinator of all other factors of production. Input, fixed inputs or variable inputs की बात होती है. The factor of production, that is carrying out the production, is called input. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ये ज़हन में रखें कि
जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन चार पिलर्स हैं कि जो डिस्कस होंगे. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट one needs to be taking care of. In this slide, we will be discussing input. Now we will be discussing different stages. So there are three different stages. The law of variable proportion. The first stage is increasing return, and total product increases at increased rate till the end of the stage. AP also increases and reaches at highest point. MP also increases and it becomes equal to AP at the end of the stage, where marginal product is greater than average product. So second stage is TP increases but at diminishing rate, and it reaches at highest at the end of the stage. AP and MP are decreasing but both are positive. So MP becomes 0 and total product is at maximum at the end of the stage. So marginal product is less than AP. Whereas third stage, which is a negative return, so TP decreases and TP curve slope downwards, which is being shown in the graphically in the picture right bottom. So as TP is decreasing, MP is negative, AP is decreasing but पॉजिटिव. सो इन तीन स्टेजेस को ग्राफिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेज 1 जो है वो किस जगह पे आ रही है, एन पे, स्टेज 2 एच और एम पे, और स्टेज 3. सो ये तीन स्टेजेस हैं कि जो डिफाइन हो रही हैं. आप इसमें कर्व्स को देखेंगे तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो एच के ऊपर हाईएस्ट पे जा रही है, फिर एवरेज प्रोडक्ट आपके पास एस पे हाईएस्ट पे है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एम को क्रॉस करते हुए नेगेटिव की तरफ नीचे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है. सो वन नीड टू keep these demonstrations in mind while discussing the total product, average product and marginal product, and under the umbrella of these three stages definition. With this, we come to an end to this particular lecture, and I will be coming in the next lecture with a discussion on economies of scale, constant return of scale, increasing return of scale. So keep stick to these lectures and we will be discussing it in detail and making our concept clear on these things. So मिलते हैं next lecture में. Assalam. Alaikum. This is Aamer Alyzaee under lecture 6 stream 4. We will be discussing in this particular lecture the isocons, then law of return of the scale, increasing return of scale. We will be looking at constant return to scale, and then finally we will be discussing economies of scale. So stick to this lecture. To define isocons. So now isocons, we will have a look at it, and isocons represent all those possible combination of two and labor or capital which is capable to produce an equal level of output. तो अब यहाँ पे हम ऊपर टेबल में एग्जांपल देखते हैं कि कॉम्बिनेशन हमारे पास ए बी सी डी और एफ तक जा रहा है. लेबर हमारे पास अगर हम 20 लेबर यूज़ करते हैं और कैपिटल लेट से 1000 रुपीज़ देते हैं पर लेबर को, तो आउटपुट लेवल हमारे पास या टोटल 1000 रुपीज़ लगते हैं और आउटपुट लेवल हमारे पास 100 यूनिट निकलता है. अगर हम बी के अंदर लेबर 18 यूज़ करते हैं, 18 लेबर यूज़ करते हैं और कैपिटल हम लोग 2000 टोटल कॉस्ट आती है, तो हमारे पास 100 यूनिट्स. अगर हम लेबर 12 यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल हमारे पास 3000 हमारा यूज़ होता है, आउटपुट देखें तो ऑल द वे राइट पैन के अंदर हमारे यूनिट्स में 100 यूनिट्स चल रहे हैं. यहाँ पे लेबर कम होता जाएगा, कैपिटल बढ़ता जाएगा. लेकिन मेन पॉइंट जो आइसोकॉन्ट के अंडर टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड करने की है वो कि आपका आउटपुट लेवल है. यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को जो एग्जांपल देता हूँ कि पहले ज़माने में हम मज़दूर यूज़ किया करते थे. घर की बुनियाद की खुदाई के लिए 5 से 6 मज़दूर लगते थे. एक हफ्ते में जाकर वो आपके लिए 3 फुट या 4 फुट के लिए बुनियाद खोदते थे घर की कंस्ट्रक्शन की. आजकल टेक्नोलॉजी ने उसको ओवर रूल कर दिया हुआ है. अब आप एक्सकेवेशन मशीन यूज़ करते हैं और वही काम हार्डली 2.5 से 3 घंटे में हो जाता. सो एन आइसोकॉन रिप्रेजेंट्स ऑफ those possible combination of two input, कौन से, labor and capital, which is capital to produce an equal level of output. of return to scale को देखते हैं. The laws of return to scale explain the behavior of output in response to a proportional and
simultaneous change in inputs. Increasing inputs proportionately and simultaneously is in fact an expansion of the scale of production. When a firm increases both the input proportionately, there are three possibilities. क्या है कि total output may increase more than proportionately, total output may increase proportionately, and total output may increase less than proportionately. Accordingly, there are three kinds of return to scale: increasing return to scale, constant return to scale, or decreasing return to scale. इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल के अंदर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ जाती है, जिसके ऊपर हम तीन मुख्तलिफ कर्व्स हैं जो इंक्रीज रिटर्न ऑफ स्केल को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे एल और के दरमियान ई पॉइंट पे है, एल और लेमडा के दरमियान एफ पॉइंट पर है, और इसी तरह एल और लेमडा के दरमियान ई डैश पॉइंट के ऊपर आ रहा है। सो द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टेक्निकल और मैनेजरियल डिविजिबिलिटीज की वजह से है। नंबर 2 हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, और नंबर 3 डायमेंशनल रिलेशनशिप की वजह से। Scale, so when the change in output is proportional to the change in input, it exhibits constant return to scale. So in this slide we will look at the economies of scale. So how economies of scale is being defined under the definitions of economics, and economics term that describes the competitive advantage that large entities have over small entities. So manufacturing cost can fall 70% to 90% every time for business doubles its output. So that is the impact. Internal, the sheer size of the company showing bulk purchases, and external receiving preferential treatment from government or other external sources. So if we look at the cost per unit and the cost per quantity per unit, if we plot it graphically, so diseconomies of scale can result if a company becomes less efficient. Whereas looking at the large shipping companies, the bigger investment is involved, big capital is involved. So large shipping companies can use ships that carry as many goods as 16 freight trains. So that is the impact under the economies of scale. Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. For understanding the background of the economies of scale with the basic idea, the more you make something, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उसकी एवरेज कॉस्ट पर आइटम कम हो जाएगी। अगर आइटम प्रोडक्शन कम होगी, नंबर ऑफ आइटम्स कम होंगे, उसकी एवरेज कॉस्ट पर आइटम ज़्यादा होगी। वॉलमार्ट की एग्जांपल लेते हैं कि जो अनबीटेबल इकोनॉमीज हैं ऑफ स्केल, whereas the Walmart's example, why we are giving the Walmart example, it has a bigger setup. Like they are working in 28 countries, they have more than 2.1 million employees, more than so many countries population, and Walmart owners are from bottom to top, has just 10, 9, 8, 6, 7, last 4, 5 the top billionaires of the world. So they are earning and they are putting their effort into the Walmart's system. So that has a bigger impact on the economies of scale in the US. What happens with that? Bulk input, spread fixed costs, specialization, cheaper loans they can get, and improve processes. We're discussing internal economies of scale in the long run. So looking at different examples here, technical economies, that is benefits of containerization. Containerization actually
has a bigger impact that auto revolution in 1970s. Purchasing economies in bulk buys like Walmart, like Gary Muhammad or Metro in Pakistan's contracts, because they buy in bulk. So Pepsi, Coke, Lever Brothers, the other big manufacturers, they bang on them, they trust on them because the bigger chunk of their production goes to these big sellers, their warehouses. Managerial economics using specialized staff. Financial economies, they are lower interest rates on loans. Risk-bearing economies from diversification. So in last we were discussing the network economies, build networks of suppliers and customers. So again giving example of these big warehouses, big carports, जिनके जरिए ज़्यादा बल्क फैक्ट्रीज उसे उठाया जाता है कि वेयर हाउसेज में हाउस में रखा जाता है, फिर रिटेल मार्केट में हम कंज्यूमर के लिए उसको सेल आउट किया जाता है। तो यहाँ पर प्राइस का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। यहाँ पर जिस प्राइस के ऊपर आपको लेविस के पास के प्रोडक्ट मिलेगी, जिस प्राइस के ऊपर आपको लीवर ब्रदर्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट मिलेगी, आम मार्केट में उस रेट में मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? बल्क क्वांटिटीज उठाते हैं, बल्क क्वांटिटीज जब उठाएंगे तो यूनिट को स्पेसिफाई करना, यूनिट रेट को लोअर कॉस्ट के ऊपर लेकर आना, बीच में से मिडल मैन थर्ड मैन निकल जाएगा। डायरेक्ट फैक्ट्री से बल्क शिपमेंट थ्रू कंटेनर्स इनके वेयर हाउसेज में आती है, जिसकी वजह से प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है और ये इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ड्राइव करता है। व्हाट आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी रिसर्च का इम्पैक्ट मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मौजूद हैं, एलोकेशन ऑफ सप्लाईज की बात आ जाती है, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किल्ड वर्कर की बात आ जाती है। एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल पे इम्पैक्ट आती है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आर इम्पोर्टेंट। Businesses in similar industries cluster together. Similar industries, fan industry, sports industry, automobile industry, similar industry की बात हो रही है, and attracting influx of skilled talent which provides human capital to expand businesses. In order to marshal the economies of scale, there are two components: external economies, internal economies. External, we have just discussed what are the internal economies, which factors come into it. So यहाँ पर हमारे पास लेबर है, टेक्निकल है, मैनेजरियल है, मार्केटिंग, फाइनेंशियल इकोनॉमीज हैं। तो जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट, इंटरनल इकोनॉमीज में ये फैक्टर मैटर करते हैं, एंड दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल। नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing internal and external economies of scale, and we'll look at the differences in between, and we'll also put up एक बड़ी एग्जाम्पल के साथ हम इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग आ सके स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो हम मिलते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 आसाम। Bismillah, Rahim. This is Aamer, Alyzaee, and we will be starting lecture 6, stream 6. We will be discussing internal external economies of scale, and in detail we will be discussing the difference between the internal economy of scale and external economy of scale, and we will come out with an example. Small scale के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का या परचेज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है टूवर्ड्स large scale. So with that example, basic concept we made clear. External economies of scale के अंदर हम देखते हैं कि इंटरनल, जैसे कि हमने अभी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि मैनेजरियल इकोनॉमीज को स्केल को देखते हैं, फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, मार्केटिंग है, फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था उसको हम फर्दर देखते हैं। एक इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात है, R&D यहाँ पर आ जाता है, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन की बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि
यूनिवर्सिटीज़ की बात है, यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च की बात है, न्यू इन्वेंशंस की बात आ रही है, कंसंट्रेशन की बात आई तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम एग्जाम्पल ले देते हैं तो उसी में R&D के ऊपर भी काम हो, उसी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह टेस्ला की बात है, टेस्ला इस वक्त तमाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के स्पैन में they're leading from the front। वो नई से नई इनोवेशन दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जिद्दत दे रहा है, और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है उसकी चार्जिंग बूथ की और बैटरीज की चार्जिंग की, तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन सेट बैटरीज जो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मार्केट हो जाएगी, जो लाइफ टाइम चार्जिंग दे रही होगी। सो दिस मीन्स के the world is going towards a revolutionary change. 2020, right after 10 years, we will not see any vehicle of petrol or diesel in the market. We will see the low emission vehicles in each and every moving vehicle or train or aeroplanes, even they might be shifted, will be shifted on the technological era, and that is on electric. So this will be the change on through external economies. And we will be discussing the difference between internal and external economies. तो जब हम उसकी difference की बात करते हैं, that is internal expansion of the firm itself, कि पहले वो 10,000 units of football बना रहा था, अब expand करते हैं second unit लेके, तो they are now producing 20,000 footballs instead of 10,000 because of the second unit. So this is the expansion. Look at the McDonald's or KFC expansion from America to Europe and then to Africa and Asia, and each and every country they are present their economies of scale, that is expansion. Lower long run average cost, उसके लाजमी बात है कि एवरेज कॉस्ट जितनी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, जितनी मटीरियल ज़्यादा डेवलप हो होंगे, उतनी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। एफिशिएंसीज फ्रॉम लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, रेंज ऑफ इकोनॉमीज, दैट इज फ्रॉम टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बोथ की बात आ रही है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री बेनिफिट्स मोस्ट ऑल फॉर्म्स, तमाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आर इम्पोर्टेंट, उसकी डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हेल्प टू एक्सप्लेन दी रैपिड ग्रोथ ऑफ many cities. So लाजमी बात है इसका इम्पैक्ट पड़ता है बड़े पैमाने पर, और not only cities but पूरा countries as well. So it has a larger impact in bigger economies. Example of it is हमने भी पहले भी जिक्र किया था कि we will explain it with an example talking on the slide. So in this slide we are discussing एक केस परचेज दे दें, एक बॉक्स परचेज करते हैं और द परचेजिंग कॉस्ट इज 1 pound पर यूनिट। उसके लिए छोटा ट्रक यूज होगा, लेट्स से शाज़ोर यूज होगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो सेल्स कॉस्ट जो है वो 1.3 pound पर यूनिट है, 1 pound 3 pence पर यूनिट आएगी, और उसको ज़्यादा वेयर हाउस की बात नहीं होगी। जब एक कार्टन शॉप तक डिलीवर होगी उसकी कॉस्ट हाई होगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 50 pence पर यूनिट कॉस्ट कर रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी मूवमेंट, सारी चीज़ें सम करते हुए 1.3 लगती है। जब हम पूरे पैलेट की बात करते हैं जिसके ऊपर 20 या 25 कार्टन आ जाते हैं, पहले एक कार्टन की बात हुई, 25 कार्टन की बात हो गई, तो उसके लिए 50 और उसके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए। We are discussing small generators or the bigger items for which we need big container to transport. So discounted purchase चाहिए होगा, वहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक ही बड़े ट्रॉलर के अंदर बड़ी चीज़ें वो वही बजाय से 50 और 670 लगे, अब एक ही कंटेनर में एक ही बड़े ट्रॉलर में उसको 1 गो में 1 मूवमेंट में मूव करके, तो जब वो जाएगा तो वो शॉप की तरफ नहीं जाएगा, वो वेयर हाउस में जाएगा, बड़ी जगह पर ज़्यादा प्लेस होगा। सो वी डिस्कसिंग वेयर हाउस की जब उसकी कीमत होगी तो अभी टोटल सेल कॉस्ट 1 pound पर यूनिट आ रही है। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और अच्छी एग्जाम्पल है कि इसके अंदर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि स्मॉल स्केल के ऊपर जब आप डिलीवरी कर रहे होंगे तो 1.3 से
लार्ज स्केल के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 1 पे आ जाएगा, मतलब 0.3 आपके शॉर्ट हो जाएंगे। हर 3 डिलीवरीज के ऊपर £1 की बचत, मल्टीप्लिकेशन इम्पैक्ट के तहत आप इसको बड़े स्केल के ऊपर और लार्जर स्केल के ऊपर देखिए तो आप सोचे मैंने उसके पेप्सी और कोक की जो बिग शिपमेंट्स हैं बड़े वेयर हाउसेज में जाती होगी, कितनी ही बचत और कितनी अमाउंट सेव होती होगी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें लिबरल है, पेप्सी है, कोक है। सो इनकी बल्क डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा बचत होती है एंड दे आर हैप्पी टू हैव बिजनेस विद दीज बिग market realized in cities and different countries like Walmart है, Metro है, Punjab Dairy है, Pakistan contract। So then कि ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं इकोनॉमी पे, ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं आपके प्रॉफिट लेवल पे। So with this we have come to an end of Lecture 6, Stream 4. Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. So पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जांपल्स, सिंपल डेफिनेशंस, with technical inputs, and in this particular lecture 7, we will be discussing in different streams on various types of cost curve, and least cost combination. So stay tuned and stay stick to the lecture to have better understanding. Alaikum. So in this slide we will be discussing the types of cost: short run, long run cost, average cost, marginal cost. So there are different types of cost, like total, fixed, variable cost, direct and indirect cost, implicit or book cost, opportunity cost, recurring cost, non-recurring cost, and sunk cost, incremental cost, and cash cost. So there are different types of these costs, so one need to have better understanding of this. Short run and long run cost. The short run costs are costs that vary with variation in input. Short run costs are the same as variable costs. And what are the long run costs? So long run costs are costs that are incurred on fixed asset like plant or machinery or building. So that has an impact on in long run you have to look after for that. It is to be noted that running cost and depreciation of capital assets are included under short run costs. In this slide we will be going further deep into the definitions and concepts of different costs, so various types of cost. Cost analysis is the bedrock on which many managers' decisions are grounded. इस पर बड़े सारे managerial decisions depend करते हैं. So reckoning cost accuracy is essential to determine the firm's current level of profitability, कि अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं, मोर ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिसीजन के किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कॉन्टिनेंट जाना है. मैं अगर मैकडॉनल्ड और KFC की एग्जांपल दूँ, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ कॉस्ट एट अदर untried levels of output. In short, managers must pay close attention to the way output and cost are interrelated. Relevant cost क्या होती है कि optimal decision making depends crucially on comparison of relevant alternatives के. पेन इंडस्ट्री है तो उसके अल्टरनेट्स हैं, ऑटो इंडस्ट्री है तो उसमें अल्टरनेट्स हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है तो उसमें अल्टरनेट्स हैं. Thoroughly speaking, the manager must consider the relevant pros and cons of one alternative with other. Precise decision making principles. In decision
among different courses of action, the manager only needs to consider the differential revenues and cost of the alternatives. So this the only relevant cost are those that differ across alternate courses of action. In many managerial decisions जो managers लेते हैं, senior management लेती है, the pertinent related cost differences are readily apparent, के ready के obvious है, नजर आ रहे होंगे. The notions of opportunity cost and fixed cost are crucial for managerial decision in any firm or any industry. So, what is the opportunity cost and economic profits? The concept of opportunity cost focuses explicitly on the comparison of relative pros and cons. The opportunity cost associates with choosing a particular decision is measured by the benefits hormone and the next best alternative. So typical example of decision involve opportunity cost includes the following. What is the opportunity cost of pursuing an MBA or BBA degree? What is the opportunity cost of using excess factory capacity to supply special orders? What is the opportunity cost that should be imputed to city on land, and that is to be the size of a public park carriage downtown? By pursuing the MBA degree full time, what is he giving up? Presumably, it is the income he could have earned from the present job. This opportunity cost is larger or smaller depending on how remunerative the job is and on the chances for immediate advancement. Rahim. Alaikum. This is Alyzaee, starting with chapter 7, stream 2. In this particular lecture, we will be continuing on the cost functions. So now we will be discussing the concept of the opportunity cost. So it explains the concept of opportunity cost is simply another way of comparing pros and cons. The basic rule for optimal decision making is this: undertake a given course of action if and only if its incremental benefits exceed its incremental cost, including opportunity cost. Opportunity cost इसके अंदर शामिल है. Let's say example लेते हैं कि thus pursuing the MBA degree sense only if the associated benefits, acquisition of knowledge, career advancement, higher earnings exceeds the total cost. कि MBA डिग्री करने से आपका मकसद क्या है कि उसके एसोसिएटेड बेनिफिट्स को आपने देखना है, उस नॉलेज को आपने अपने जॉब के लिए यूज़ करना है, बिजनेस के लिए यूज़ करना है, कैरियर एडवांसमेंट की बात है, सैलरी हाई सैलरी को लेने के लिए है, अपने बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है. तो मकसद क्या है, उसका लिंक क्या है. फिक्स्ड एंड संक कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड, दिस इज दैट डू नॉट वेरी with respect to different course of action under consideration are irrelevant and need not to be considered by the manager. The reason is simple enough. If the manager computes each alternative cost, the same fixed cost is subtracted in each case. Therefore, the fixed cost itself plays no role in determining the relative merits or action. A sunk cost is an expense that already has been incurred and cannot be recovered. कि एक चीज के ऊपर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी, जो सोच लगा दी, जो कॉस्ट हो गई है, वो रिवर्ट नहीं हो सकती, वो वापस नहीं हो सकती. For instance, in the earlier factory example, plant space originally may have been built at a higher price, but this historic cost is sunk and is irrelevant to the firm's current decision. कि अब इसको आगे लेके चलना है, नहीं चलना है, जो आपने इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर इनकर कर दी हुई है, वो आपकी संक कॉस्ट. आगे जाके इसको और अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मोर जनरली सिंक कॉस्ट देयर शैडोज इज sequential instrumental decision. Consider a firm that has spent $20 million in research and development R&D के ऊपर $20 million लगाए of a new product. The R&D efforts to date has been a success, but an additional $10 million in need to complete a prototype product that may not be first to market. So the $20 million cost sum जो spent आपने कर दिया हुआ is a sunk cost and therefore irrelevant to the firm's decision कि आया आप उस prototype के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते हैं. R&D के ऊपर जो आपकी cost आई है, that is there, that you have already spent. If the product future prospects are unfavorable, the firm should cease R&D. So कहने का मकसद है कि sunk cost आपका concept आपका यहाँ पे clear होता है. Sunk cost के आगे भी एक definition आ रही है power plant से related. You can go through it and hope this will clarify the basic concept of it. Function. The cost function indicates the firm's total cost of producing and a given level of output.
Our analysis of cost distinguishes between the short run and the long run. So short run is a period of time so limited that the firm is unable to vary the use of some of its inputs. उसके पास time period बहुत short होता है. Long run में टाइम हमारे पास ज़्यादा होता है, उसमें हम ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर सकते हैं. So in the long run all inputs like labor, equipment, factories can be varied freely. उसके पास आपके पास खुला टाइम होता है. Our investigation of cost begins with the short run. So the short run cost, we focused in two inputs, capital and labor. In the short run, capital is a fixed input and labor is a sole variable input. Production of additional output is achieved by using additional hours of labor in combination with a fixed stock of capital equipment in the current plant. So the fixed cost results from the firm's expenditure, fixed inputs. These costs are incurred regardless of firm's level of output, कि वो कितने पंखे प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 की हैं, 20,000 की हैं, 30,000 की हैं, जो बिल्डिंग का एक्सपेंस है, जो टैक्स है, जो कार्ड की कॉस्ट है, जो सिक्योरिटी कैमरास की कॉस्ट है, जो ट्रकिंग और जो आपकी bills हैं, electricity और gas, those are fixed costs, you have to pay them. Variable cost represents the firm's expenditure in variable input with respect to the short-run operation of the repair firm. Labor is the sole variable input, कि उसमें आपने लेबर कम यूज़ किया तो कम तनख्वाह जाएगी, ज़्यादा यूज़ किया तो ज़्यादा कम जाएगी, वो वेरिएबिलिटी है. इलेक्ट्रिसिटी आपने ज़्यादा यूज़ किया कम, ये आपके कंट्रोल. Average total cost is the total cost divided by the total quantity of output because it excludes fixed costs. इसके अंदर से आपकी fixed cost निकल जाती है. Average variable cost is always smaller than average total cost. Marginal cost क्या है? हर extra amount की बात हो रही है. In the addition to total cost that result from increased output by 1 unit. कि कोई एक unit आपने 10,000 पंखे बनाने थे, 12,000 में, वो marginal है, वो extra पे, जो extra 1 unit आपने extra बनाया, वो that becomes the marginal cost. Long run cost is it is the firm can freely vary all its inputs. In other words, there are no fixed inputs and fixed costs. All costs are variable. Thus, there is no difference between total cost and variable cost. Also, keeping in mind the shape of the long run cost curve depends on return of scale. ये डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के दरमियान में डिफरेंस क्या आता है. कि कंसिडर अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट यूजिंग इनपुट, लेबर और कैपिटल की बात हो रही है. मैनेजमेंट immediate task is to plan for future product. If it has not leased plant and equipment yet, nor has it hired labor, thus it is free to choose any amount of these inputs if wishes. ठीक. Decision making principles की बात आती है. Cost is an important consideration in decision making. In deciding among different courses of action, the manager need only consider the differential revenues and cost of the various alternates. The opportunity cost associated with choosing a particular decision is measured by the foregone benefits of the next best alternative. So economics profit is the difference between total revenue and the total cost, कि आपने कितना खर्चा किया है और कितनी आपको इनपुट हुई है. Explicit cost and opportunity cost को कैलकुलेट करते हुए. Marginal decision should be based on economic profit, not accounting profit. Costs that are fixed or sunk cost, मैंने अभी R&D की एग्जांपल पिछली स्लाइड में दी थी, with respect to alternate courses of action are irrelevant. In the short run, the firm should continue to produce as long as price exceeds average variable cost, assuming it does produce the firm maximization of the profit. In the long run, all revenues and costs are variable. The firm should continue production if or only if it earns a positive economic profit. जब तक फर्म प्रॉफिट कमाती है, थोड़ा है या ज़्यादा है, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, इवन इक्विलिब्रियम पॉइंट को भी टच कर रहे हैं, तो you start producing, you keep producing things. In multiple production, firms should continue operating in a long run only if total revenue exceeds total cost. There is no need to allocate share cost to specific products. और लॉन्ग रन कॉस्ट को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज कि इन द शॉर्ट रन देयर आर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग रन में देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट. Efficient long run costs are sustained when the combination of output that a firm produces result in the desired quantity of goods at the lowest possible cost. Variable cost क्या है कि that change with the output. Example of variable cost include employee wages, cost of raw material, guard, security cameras, all those things. Trucking, their maintenance, all these things are related to it. The short run cost increase or decrease based on variable cost as well as the rate of production.
If a firm manages its short-run costs well over time, it will be more likely to succeed in reaching the desired long-run cost or goal. With this, we come to an end of this particular lecture, and in next stream 3 we will be discussing on costs in detail. Rahim, Alaikum. This is Alyzaee again. Chapter 7, Stream 3. In this we will be discussing the total cost, average cost, marginal cost with definition and with some examples to have better understanding. Direct cost और indirect cost क्या होती हैं, implicit और book cost क्या होती है. So we will be discussing with opportunity cost. So to have better understanding on cost, ये डिस्कस करेंगे कि जी टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में क्या फ़र्क है. Total cost is the total expenditure incurred in the production of goods and services, as it is clear from its title. Average cost is not actual cost. It is obtained by dividing the total cost by the total output cost. Marginal cost is the addition to the total cost on account of producing one additional unit of product. Fixed cost and variable cost क्या हैं? Fixed costs are those which are fixed in volume for certain given output. Fixed cost does not vary with variation in output between 0 and a certain given level of output. Business expenses that are not dependent on the level of goods or services produced by business, whereas variable costs are those that vary with the variation in total output. A cost that changes with the change in volume of activity of organization is called variable cost. Direct cost and indirect cost. So direct cost is a price that can be completely attributed to the production of specific goods or services. Some costs such as depreciation or administrative expenses are more difficult to assign to a specific product, and therefore are considered to be indirect cost. So direct cost can be considered a variable cost if it is inconsistent and changes amount often. Indirect cost is a cost that are not directly accountable to a cost objective, such as a particular project, facility, function, or production. Indirect cost may be either fixed or variable. Indirect cost includes administration cost, personal cost, security cost, cameras की, guards की, जो मैंने already पहले discussion की. These are those costs which are not directly related to production, के साथ ये related नहीं है, लेकिन administratively you have to look at it. Some indirect cost may be overhead, but some overhead cost can be directly attributed to the project and are direct. ये देखेंगे कि implicit और book cost क्या है. Implicit cost क्या कहती है कि these are those which fall under actual cost entered in the books of account. In contrast, there are costs that do not take the form of cash outlays, nor do they appear in the accounting system. Such costs are called implicit or imputed costs. So in economics, an implicit cost are called as imputed costs, implied cost, or notional cost. In the opportunity cost, equal to what a firm must give up in order to use a factor of production for which it already owns and thus does not pay rent. It is the opposite of an explicit cost, which is borne direct. In other words, an explicit cost is an implicit cost is any cost that results from using an asset instead of renting it out or selling it. कि जनरेटर है तो वो ख़रीद लिया जाए बजाय इसके कि उसको रेंट आउट करें. व्हीकल्स हैं तो वो ख़रीदी हुई हैं, ट्रक्स ख़रीदे हुए हैं बजाय इसके कि आप रेंट करें और उसके ऊपर अपने आइटम्स को एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, एक सिटी से दूसरे सिटी के ऊपर आप डिलीवर करें. जिस तरह आप नेस्टे के ट्रक्स देखते हैं, डोमिनोज के या पिज़्ज़ा हट के, आप बाइक से तो परचेज रेंट आउट नहीं. तो इसकी रेफरेंस एग्जांपल आपको इजी होगी अंडरस्टैंड करने के. द टर्म्स आल्सो अप्लाई टू फॉरगॉन इनकम फॉर चूजिंग नॉट टू वर्क. करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू अ बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बट गिव अप. कि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, लेकिन उसको उसने अवेल नहीं किया. टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्टेड differently, an opportunity cost represents an alternate given up with the decision is made. This cost is therefore most relevant for two mutual exclusive events. In investing, it is the difference in return between a chosen investment and one that is necessarily passed up. So ये उसकी basic definition है which you have to learn by heart. Option A is the example is to invest in the stock market in hopes of generating returns. Option B is to reinvest the money back into the business with the expectation that never equipped with increased production efficiency, leading to a lower operational expense and a higher profit margin. Assume
the expected return or investment in the stock market is 12% and the equipment update is expected to generate 10% return. The opportunity cost of using the equipment over the stock market is 12% minus 10%, so you got 2%. I hope with this example the opportunity cost concept is clear to you. Come to an end of this stream. See you in next stream, stream 4, and keep stick to the lectures. Assalam. So पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जांपल्स, सिंपल डेफिनेशंस, with technical inputs, and in this particular lecture 7, we will be discussing in different streams on various types of cost curve, and least cost combinations. So stay tuned and stay stick to the lecture to have better understanding. Alaikum. Tonight we will be discussing recurring cost. Recurring cost or non-recurring cost क्या होती है? कि recurring cost is repetitive or directs or indirects, which vary depends on the production. So daily basis के ऊपर, weekly, monthly के ऊपर जो cost होती है उसको recurring cost की terminology में लिया जाता है. The recurring cost is a regularly occurring cost or estimated cost which is documented with one record. So recurring cost record क्या है कि that describes the income or expense and its pattern, how often it occurs. जिस तरह ऊपर डिस्कस हुआ कि डेली होता है, वीकली है, मंथली है, कितना पोटेंसी उसकी क्या है, और उसके अंदर इंक्रीजेज हैं, डिक्रीजेज हैं, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द कॉस्ट अप्लाइज एंड सो फोर्थ. सो रिकरिंग कॉस्ट आर स्टोर्ड इन द रिकरिंग कॉस्ट टेबल. नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या है? वन टाइम एक्सपेंस होगा, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और अदर कॉस्ट दैट आर paid only once. Unusual charge, expenses or loss that is unlikely to occur again in the normal course of the business. इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें जो राइट ऑफ्स हैं, सच डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, फायर और थेफ्ट लॉसेस. सो ये नॉन रिकरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं. लॉस ऑफ पेमेंट्स हैं कि जो पे कर दी गई पर रिकवरी उनकी नहीं है. So losses on sales of assets, moving expenses, also called extraordinary cost. Another type of cost is called sunk cost. So sunk cost क्या होती है कि those which cannot be altered, increased or decreased. Sunk cost cannot be changed by any decision. They are not differential cost and should be ignored when making decisions. इसकी example by the definition of economics ये दी जाती है कि you brought an automobile that cost $10,000 2 साल पहले, 5 साल पहले आपने जो गाड़ी खरीदी है, so वो एक sunk cost है क्योंकि अब उतनी पेमेंट आपको नहीं होनी. So that sunk cost becomes whether you drive it, park it, trade it or sell it. So you cannot change the $10,000 sunk cost. This is the basic definition of in economics terms. But in Pakistan जब हम गाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका different concept बनता है क्योंकि यहाँ पर अगर गाड़ी आपने कंडीशन अच्छी रखी हुई है तो you might sell it in the same cost. लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट रेस किया जा रहा है वो ये है कि 2 साल या 3 साल पुराना मॉडल विद रनिंग ऑन द रोड प्लस द इंश्योरेंस, तो ये सारी चीज़ें इसको डिवैल्यू करती हैं और इसका कंपैरिजन नहीं बन सकता नई गाड़ी की या नई कॉस्ट के साथ आफ्टर सर्टेन ईयर्स. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सunk कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि इज ऑल्सो रेफर्स टू एज मार्जिनल कॉस्ट. In the encompassing change a company experiences within its balance sheet or income statement due to the production and sale of one additional unit of production. So जो एक extra cost, एक extra item, एक extra unit produce हो रहा है, that is the incremental cost जो उसके ऊपर occur होती है. It is calculated by analyzing the additional charges incurred based on the change in a certain activity. So marginal cost की definition क्या आ गई कि marginal cost refers to the cost incurred in producing an additional unit of the output. Incremental costs are defined as a change in overall cost that result from particular decision being made. For example, introducing of a new marketing and advertising strategic production of a component of a product instead of outstanding. So इसका मतलब है कि that will affect the total cost. So ये incremental cost की definition है. Cash cost is a cash and this is accounting cost, recognized process that classifies cost as they are paid for cash and recognition in the journal ledger at the point of
तो ये मेथड जो है वो एक्रूवल कॉस्ट वेरिफिकेशन में चला जाएगा, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस दी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश कॉस्ट और कॉस्ट एंड बिजनेसेस पे फॉर व्हेन यूजिंग कैश और नॉट चेक्स और अ चेक बट नॉट थ्रू क्रेडिट। इसका क्या मतलब है कि कैश अकाउंटिंग बेसिस में कॉस्ट पे by using credit के थ्रू जो पेमेंट की जाती है, that could not be recorded in the journal ledger until the actual cash has been paid. This is the main reason why firms moved away from the cash accounting method to the accrual methods, as the accrual method will recognize credit transactions as well as cash transactions. So when you buy dinner for your friend or make your monthly automobile payment, you are incurring a cash cost or cash flow. So cash cost or cash flow are the basis of इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एनालिसिस में रिवीजन के लिए शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और मुख्तलिफ इक्वेशंस को लेकर आया हूँ ताकि ये हमें याद रखनी ज़रूरी है कैलकुलेटिंग एनी वैल्यू। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल कॉस्ट टोटल एफ सी प्लस टोटल वी सी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो ये मुख्तलिफ इक्वेशन हैं कि जिसके अंदर जब हम डेटा सेट इंक्लूजन करते हैं तो हमें सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसा आप हम इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर 7 स्ट्रीम 5 में शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, टेबल्स के थ्रू डिफरेंट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस को देखेंगे कि कैसे ग्राफिकली शॉर्ट रन कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अस्सलाम Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students impact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. क्वांटिटी हमारी 0 से 1 2 3 4 5 पे जा रही है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर $60 ही रहे तो हम देखते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसमें क्वांटिटी चेंज होने से इम्पैक्ट आएगा कि वो लेबर अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो फिर कॉस्ट 20 फिर 30 फिर 45 इस तरीके से बढ़ती जा रही है। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ये टेबल उसको और फर्दर एलेबोरेट करता है विद इंक्रीज इन क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप देखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 20 30 45 पे इंक्रीज होती जा रही है, तो टोटल कॉस्ट को आप देखें तो ये दोनों ऐड होकर हमें टोटल कॉस्ट देते हैं। इसी तरीके से हम फर्दर कैलकुलेशंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ग्राफिकली देखें तो एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को मेंशन करते हैं। उसी टेबल के फिगर्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट लाइक फॉर टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, जब वो $60 की जगह पे जा रही है और बाकी वैल्यूज जो हैं वो ट्रैक करती हैं, तो ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है पर यूनिट कॉस्ट को। सो दिस इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम टेबल। हम लोग लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स को देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। सो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो किस तरीके से टेबल से जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने आती हैं। सो वन शुड एटलीस्ट नो कि दीज टेबल पिक्चर्स, दीज टेबल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर वी चिप इन द डाटा फ्रॉम द टेबल के जो डाटा हमारे पास मौजूद होगा, और कैलकुलेशंस हमने सेक 1 सेक 2 सेक 3 और इस तरीके से इनकी जो करनी है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के दरमियान एवरेज कॉस्ट के एक रिलेशनशिप को देखने के लिए इक्वेशंस भी जो यूज़ होती हैं वो ऊपर मेंशन है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का क्या फार्मूला है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो वन शुड एटलीस्ट नो कि दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के जो आपको एक
क्लियर पिक्चर देती हैं आफ्टर डाटा इनपुट। डेफिनेशन में एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है लर्निंग कर्व्स की। सो इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि लर्निंग कर्व किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है और इसका मकसद क्या है। कि अगर हम एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट को रखते हैं और वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट को रखते हैं, तो एफ जी और एच जो कर्व बना रहा है वो लर्निंग कर्व कहलाता है। इसकी यूटिलिटी क्या है कि टू फोरकास्ट नीड्स ऑफ पर्सनल मशीनरी, रॉ मटेरियल, scheduling production, determining selling price of products। उसको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग कर्व है क्या। स्लोप ऑफ लर्निंग कर्व, हाउ रैपिडली द लर्निंग कर्व डिक्लाइंस। तो इसमें हम क्या चीज़ें देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉय का टर्नओवर जो है वो इम्पैक्ट करता है प्रोडक्शन इंटरप्रिटेशन को देखा जाता है। तीसरा फैक्टर एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। द एवरेज कॉस्ट typically declines from 20% to 30% for each doubling of cumulative output for many firms। कि आर्किटेक्चर ऑफ आइडल फर्म क्या चीज़ है, कि आइडल फर्म के लिए क्या बेसिक्स होनी चाहिए। उसमें हम शामिल हैं कोर कंपिटेंसीज मौजूद हों, आपकी टीम बेहतरीन फिट हो इस फर्म के लिए, आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर टास्क, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर मौजूद हो, एजिलिटी एंड रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट फोर्सेस के कभी बॉटलनेक होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। लोकेशन और नियर मार्केट्स के करीब लोकेशन हो, वेयर हाउसेस की लोकेशन, ईजी और फ्रेजाइल डिलीवरी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। With this we come to an end of this particular lecture. In the next lecture we will be discussing further on least cost combination and isocont curves. Alaikum. This is Aamer Khan Alyzaee. Now we are coming to the last lecture of 7th chapter, and this is stream 6, in which we will be discussing least cost combinations and isocont curves and isocont lines. लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द रैशनल फर्म वुड कंबाइन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन its production function in such a way that the minimum input and maximum output is obtained at a minimum cost। ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की आउटपुट ले सकता है, मिनिमम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकता है, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो भी महदूद होगी। So such a combination is referred to as the least cost combination. Now what is least cost combination? Least cost combination states that is the optimum combination of factors of production at which a factory owner has to pay minimum cost of producing a certain quantity of output. So there are two concepts in consideration. One is isocont curve, the other is isocont line. So what are isocont curve? It represents all the factors inputs which yield a given quantity of product. A product map, a family or a group of equal product curve is called an iso product map. So there are three alternatives: spend all its finance on capital, spends all its finance on labor, and the third one is partly on capital, partly on labor. The assumption of least cost combination, there are two factors of production, one is labor and the other is capital. So all units of labor and capital are homogeneous. The prices of unit of labor and capital are given and constant, and the last one is the firm aimed at profit maximization. So least cost combination may be stated as marginal productivity of labor divided by price of labor, whereas marginal product of capital, MPC, divided by PC. So where MPL is marginal productivity of labor, PL is price of labor, MPC is marginal productivity of capital, and PC is price of capital. So when we have known values, we will put in this equation, so we will get this calculated. इस स्लाइड में हम लोग आइसोकॉन्ट कर्व को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास ए बी और सी एक कर्व आ रहा है लेबर और कैपिटल को सामने रखते हुए, और बी और Q1 दूसरा कर्व आ रहा है। सो कैपिटल ज़्यादा होगा तो लेबर कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। आइसोकॉस्ट में डज नॉट हैव इंटरसेक्ट। सो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने के लिए कि आइसोकॉन्ट्स में आपस में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आइसोकॉन लाइंस, so as
total outlay increases, the isocont line moves higher and higher away from the origin. The isocont lines are straight. So looking into the graphical representation of it, on y-axis we have capital, on the x-axis we have labor. When capital is at 3, so the laborer or the workers are at 6. The isocont total cost is $3,000. So when we will be moving ahead on having more capital and looking at number 6, so definitely we will be hiring more workers, more laborers. So the isocont total cost will be at $6,000, and same will go for the next line. So it means the capital increases the number of workers or laborers, and the line pushes from $3,000 to $6,000, $6,000 to $9,000, and this is how it is presented here. One point needs to be noted here, that the slope of isocont line represents price rate. So we come to an end of lecture 7. Now we will be starting lecture 8, and in this particular lecture we have discussed various types of cost curves, least cost combinations. So in upcoming lecture we will be discussing the revenue, equilibrium, break-even points, and importance of managers. So stay tuned. Allah Hafiz.